Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. It's a video on Kurukshetra monthly compilation, and I'll be discussing Kurukshetra for the month of February 2022. Right, Kurukshetra is again something very important for the civil services examination, either it is prelims or PETs. So in this video, in this session, we'll understand some of the relevant articles that were reported for the month of February. So let's get started. And this is the edition of Kurukshetra, which focuses upon the health. The entire journal is focusing upon the health issues. So how this is going to be important for your mains examination specifically. So this would be more relevant to your general studies paper too for some of the very specific topic. The first topic is government policies and intervention for the development of various sectors and issues arising from it, design implementations. From there, UPSC can ask you a mains question as well. Second topic that is again relevant for GS paper 2 is welfare programs for the vulnerable section of the population by the center and the state. And the third topic, the subtopic of the syllabus, again in same paper 2, that is issues related to development and management of health. So let's understand how this issue of health that is focusing upon important aspects of the health infrastructure, government programs and policies, and its implementation. Before I start, those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. So the first topic that is reported in the journal is rural healthcare infrastructure, something very important, very pivotal at this point of time, at this juncture where the entire world is facing the pandemic effects, right? So to understand how the rural infrastructure, what is the status and how this can be boosted upon. Now, the health of the citizen has become paramount. अगर बात करें COVID-19 के situations को, that has continued almost for 18 months and down the line it would be close to a year. So 2 year के आसपास रही होगी approximate that the pandemic has continued. तो यहाँ पे ज़रूरी है कुछ important point को assessment करने के with regards to the health care. So assessment of healthcare facilities, upgradations of hospital, modernization of diagnostic facilities, increase अवेबिलिटीज एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेडिसिन, उसके अलावा जो स्किलिंग की ज़रूरत है हॉस्पिटल वर्कर्स की, राइट, वी नीड टू अपग्रेड एंड अपस्किल आवर वर्क फॉर ऑल्सो. दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर जो भी किसी भी पेंडेमिक से फाइट करने के लिए एसेंशियल है, राइट. सो मेक श्योर व्हेन यू राइटिंग इन मेंस पेपर यू यूज ऑल दिस पॉइंट देयर. हाउएवर द स्टेट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिफरेंट फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. हर एक कंट्रीज की जो बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, जो इम्यूनिटीज है, वो डिफरेंट होगी. टॉक अबाउट द वेस्टर्न कंट्रीज, दे हैव अ वेरी गुड सेटअप ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर. टॉकिंग अबाउट इंडिया, वी हैव अ लॉट मोर बॉटलनेक्स, वी हैव लॉट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट. तो ये वेरी करती है अर्बन एरियाज में, अर्बन सेंटर्स में भी और रूरल सेंटर्स में. इन इंडिया ओनली यू कैन फाइंड दैट डिस्पैरिटी अबाउट द अर्बन एरियाज हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द रूरल एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की अगर बात करें, गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है कोविड से पहले, गवर्नमेंट की क्या एक ब्रॉड स्ट्रक्चर रोड मैप है, किस तरह की एग्जीक्यूशन पार्ट है. फर्स्ट इज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राइट. सो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इज अ रूरल हेल्थ मिशन के अंदर में आती है, जहाँ पे ये जो नेशनल हेल्थ मिशन है, इज अ पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन इटसेल्फ, हैज बीन डेवलप्ड एज अ 3 टायर सिस्टम, जहाँ सब सेंटर्स इंक्लूड किए गए हैं, विच इंक्लूड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जिसको PHC भी कहते हैं. उसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर विच इज CHC, and the third is Ayushman Bharat, right? So these are some of the 3 subcategories or 3 tier system upon which the government is working. So Ayushman Bharat की अगर बात करें, ये existing है सब health center के साथ and with the primary healthcare centers that can be transformed into बेसिकली AB हेल्थ सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे 12 पैकेजेस ऑफ कंप्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होंगे, जो इंक्लूड करेंगे प्रिवेंटिव्स, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, पैलेटिव, रिहैबिलिटेशन सर्विसेज विच इज यूनिवर्सल, फ्री, क्लोज टू कम्युनिटी. इन नटसेल दिस कॉल फॉर अ होलिस्टिक और अम्ब्रेला अप्रोच, जहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर में सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत है, बीट इट इज प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव. This is what the statement is talking about. Now, Ayushman Bharat, which is a प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यहाँ पे हेल्थ कवरेज दी जाती है 5 लाख रुपीस के आसपास पर फैमिली टू अराउंड 10.74 करोड़ पीपल. इट हैज बीन प्रोवाइडेड वैसे लोग जो वनरेबल हैं एज पर द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस. एवरी टाइम गवर्नमेंट हैव अ सेंसस, सो दे अकॉर्डिंगली कैलकुलेट की जो बेनिफिशरीज हैं उनके नंबर कितने.
Now, प्रधानमंत्री आयुष भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की अगर बात करें, विच इज स्पेसिफिकली फोकसिंग अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सो इसके अंदर टोटल जो गवर्नमेंट ने एलोकेशंस की हैं दैट इज 64,180 करोड़ रुपीस फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 2025 टिल 2026, राइट, जिसमें इन्विसाज की गई है पब्लिक हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। एन अदर हैंड द हेल्थ रिफॉर्म फॉर अ बेटर एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरिया। किन किन चीज़ों पे ध्यान देनी है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट पॉइंट दैट हैज टू बी हाईलाइटेड अंडर प्रधानमंत्री आयुष भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो पहली है स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इन विलेजेस एंड सिटीज फॉर अर्ली डिटेक्शन डिजीजेस। कोई भी ऐसी डिजीज है जो प्रिवेंटिव, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसकी अर्ली डिटेक्शन की जाती है, उसके लिए वेलनेस सेंटर बनाने की बात की गई है। सेकेंड, एडिशनल न्यू क्रिटिकल केयर related beds at district level hospital. Third, supporting block public health units, जिसको BPHUB कहते हैं, it's with 18 high focus states, 11 14 high states, high focus state, and the last is integrating district public laboratories in all district, right? Laboratories again something very important and essential to understand the nature of a disease and to predict what can happen in future. So these are some of the core areas, core pillars हैं जो कि better access to healthcare provide कर सकते हैं rural areas में। Now national health mission की अगर बात करें, NHM, its support is provided to the state, जो इंश्योर करती है रेंज ऑफ फ्री सर्विसेज, चाहे वो मेटरनल हेल्थ को लेकर के हो, चाइल्ड हेल्थ हो, एडोलेसेंस हेल्थ हो, इवन इन प्लानिंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के ऑलरेडी इन धनुष मिशन है उसको अब इसमें इंक्लूड कर सकते हो। एंड मेजर ऑफ द डिजीज इंक्लूड ट्यूबरकुलोसिस, वेक्टर बोर्न डिजीजेस लाइक malaria, dengue, kala azar and leprosy, and some other diseases that also are part of this. Now कुछ मेजर इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर लिए हैं, दैट इज जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, दिस इज ऑल्सो नोन एज JSK, विच इज अंडर फ्री ड्रग, फ्री डायग्नोस्टिक, फ्री ब्लड एंड फ्री डाइट, राइट, जहाँ पे एक इंडिविजुअल मदर को फ्री ट्रांसपोर्टेशन भी प्रोवाइड की जाती है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रमोट की जाती है, एंड इवन all basic support is provided to a pregnant woman, right? So this is how government is looking forward with Janni Shishu Suraksha कार्यक्रम. Now राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये जो न्यू बॉर्न बेबीज होती हैं उनके स्क्रीनिंग के लिए, उसके जो बेसिक प्री नेटल टेस्ट होती है, पोस्ट नेटल टेस्ट होती है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बर्थ डिफेक्ट्स, डिजीज डेफिशिएंसी, डेवलपमेंट डिलेज और टू इम्प्रूव द सर्वाइवल के लिए ऐसे एलोकेशंस दी जाती है। इस तरह के बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने रखी हुई है। Now, implementation of free drugs and free diagnostic services are there. Now, the PM National Dialysis Program is implemented by the National Quality Assurance Framework. This is something very important for your mains as well, right? National Quality Assurance Framework. यहाँ से questions आपसे prelims में भी पूछे जा सकते हैं. So, in all public healthcare facilities, which include the rural area as well. Now, implementations of mobile unit, जिसको MMU भी कहते हैं, टेली कंसल्टेशंस की भी देखी गई है, जहाँ पे ई संजीवनी जैसे जो इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के, दैट इज ऑल्सो वर्किंग वेरी फाइन, राइट, एंड दिस एम टू improve the access to healthcare, particularly in the rural areas. Now, the other topic is maternal and child health. Let's understand this in detail. पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन की अगर बात करें, दिस हैज़ कंटिन्यूड इन इंडिया। इफ यू हैव सीन, अगर सर्वे देखी जाए जो वुमेन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनकी जो बेसिक हेल्थ केयर है या फिर जो उनके पैरामीटर्स होने चाहिए वो नहीं है। दिस इज़ अ बिग पब्लिक कंसर्न इन इंडिया। सो दिस इज़ नॉट इन इंडिया प्रिसाइजली, ग्लोबल प्रॉब्लम है, जहाँ पे 24% ऑफ मदर इन द साउथ एशिया इज हैविंग लो BMI, बॉडी मास इंडेक्स जिसको कहते हैं, वो काफ़ी कम है। इवन फॉलिक एसिड और आयरन की जितनी नंबर्स होनी चाहिए उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डिफिशियंसी देखी गई। फर्दर, एनीमिया अफेक्ट्स 30% ऑफ वुमेन फॉर देयर रिप्रोडक्टिव एज एंड 37% ऑफ वुमेन हु आर प्रेग्नेंट। एनीमिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में because of the menstrual cycle which women undergoes and the loss of other level of bloods which is there, and even some malnutrition is also continuing in rural areas. So this is the reason like आयरन की जो डिफिशियंसी है वो बहुत ज़्यादा वुमेन्स में देखी जाएंगी। सो गवर्नमेंट ने इसके लिए एनीमिया मुक्त प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है, एनीमिया मुक्त भारत। दिस इज अ प्रोग्राम विच इज़ देयर विच हैज़ एक्चुअली वर्क वेरी बेटर इन इंडिया, राइट। तो इस तरह के कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स है जिस पे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, सो दैट दिस नंबर कैन बी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। Women overweight, obesity in growing problem in most low and middle income nations में। Now, according to the National Nutrition Monitoring Bureau की अगर बात करें,
सर्वे ने 10 स्टेट्स को हाईलाइट किया जहाँ पे ये बताई गई है दैट सेरेल, मिलेट्स and majority of the rural diet with approximate only half of the pregnant women getting enough protein and calories. Not only iron and folic acid, even sufficient quantity of protein which is essentially required. आपकी जितनी बॉडी की वेट है उतना आपको कम से कम उसके मतलब अगर आपकी 70 वेट है राइट तो आपको 7 ग्राम के आसपास प्रोटीन तो चाहिए होगी राइट. So this is how protein, essential protein, amino acids and calorie is not being provided to such women. तो ये भी एक बहुत बड़ी कंसर्न है. Now, the data of National Nutrition Monitoring Bureau has also revealed that most pregnant women do not have sufficient iron, vitamin A, vitamin C, folic acid, which is essentially very important for child development consumptions, and less than half of the wheat advised. तो जितने ज़्यादा चीज़ें हैं ये हमें इंक्लूड करने की जरूरत है so that the maximum benefit is given both to the pregnant women as well as to the fetus. Now, maternal malnutrition in India की अगर बात करें according to the Global Burden of Disease Study 2017 में की गई है. Poor maternal nutrition की अगर बात करें that is caused by the combinations of बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो इसकी कॉम्बिनेशंस करते हैं, इसको एड करते हैं. तो ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से ये परेशानियां बढ़ी हैं, maternal nutrition, malnutrition देखा गया है. Early and repeated pregnancy is one reason and the big most reason. अगर बात करें foremost reason में अगर ली जाए तो early and repeated pregnancy है जहाँ पे जो एक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट चाहिए होती है या फिर जो रिकवरी टाइम चाहिए होती है वो नहीं है. इवन इट इज बीइंग एडवाइज्ड, द डॉक्टर एडवाइज दैट यू शुड हैव अ इंटरवल ऑफ 5 year ड्यूरेशन बिटवीन अ बेबी राइट. Poverty is again people cannot afford such quality foods. Essentially deficiency है कैलोरी में भी और प्रोटीन और अदर कुछ ऐसे important vital vitamins में भी. Gender discrimination is other reason and other gender equality which is being like India being a country where patriarchy is like dominated in the rural areas. तो उस वजह से भी काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम है जो कंपाउंड करती है maternal malnutrition है इंडिया में उसको. गवर्नमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस हैं इन दिस रिगार्ड. पोषण अभियान है इंडिया की फ्लैगशिप नेशनल न्यूट्रिशन मिशन विच एम्स टू इनहांस द मैटरनल न्यूट्रिशन बाय एम्प्लॉइंग टेक्नोलॉजी, बिहेवियर कम्युनिकेशंस, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड क्रॉस सेक्टोरल कन्वर्जेंस. समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियली टू इंश्योर कि जो मैल न्यूट्रिशन है उनको कम किया जाए, पोषण दी जाए. पोषण इटसेल्फ मीन्स नरिशमेंट. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, अगेन समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट एट दिस कंटेक्स्ट, जहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी के थ्रू मैटरनिटी बेनिफिट को इम्प्लीमेंट किया गया है सारे रीजन्स में. एंड द स्कीम्स कवर ICDS एज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज भी है, इसके बारे में आपको पता होगा काफ़ी पहले से. दिस इज वन ऑफ द नंबर ऑफ द प्रोग्राम बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनहांस द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ अ चाइल्ड इन आवर कंट्री राइट. ये प्रोग्राम एम करती है जो बच्चों की एज ग्रुप है अंडर 6 as well as the pregnant women and the breastfeeding women should be provided services. They should be aided financially and given food as well. Recommendations हैं energy, protein, micronutrients under the ICDS, that is integrated child development schemes के अंदर. Supplementary nutrition की भी बात की गई है right. Fortified foods भी include किए गए हैं and these are developed by the ICMR recommendations on par the recommended dietary allowances right. कोई भी फूड में recommended dietary allowances दी जाती है. डॉक्टर्स जब ऐसे जो प्रेग्नेंट वमेंस हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको रेकमेंड करते हैं कि आपकी RDI क्या होनी चाहिए राइट. सो दीज थिंग्स आर टेकन केयर अंडर द रूल्स एंड प्रोसीजर्स मेंशन्ड बाय द ICMR. नाउ जननी सुरक्षा योजना, समथिंग अगेन वेरी रेलेवेंट. नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर जननी सुरक्षा योजना लाया गया था. इट्स फॉर सेफ मदरहुड इंटरवेंशन एंड दिस एम्स टू रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी among the pregnant women right. Now the program also offer performance based incentives to ASHA, that is aggregated social health activists who promote institutional delivery among the pregnant women right. So this is how the scheme is also going ahead. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के कहते हैं. इसमें एक सिग्निफिकेंट एफर्ट है जहाँ पे गवर्नमेंट ने अर्ली डिटेक्शन और इंटरवेंशन की बात की है फॉर द चिल्ड्रन ऑफ न्यूबॉर्न टू 18 ईयर कवरिंग 4 Ds. 4 ऐसे Ds हैं जिनको ऐसे जो खास करके मेजर 4 Ds हैं उनको फोकस करने की बात की है. फर्स्ट इज बर्थ डिफेक्ट्स, उसके बाद डिफिशियंसीज, diseases and development delays including the disabilities. So these are some of the prominent area highlighting these that government has come up from a newborn baby till the age of 18 years. So this thing should be looked upon under the Rashtriya Bal Swasthya Karyakram.
Now, the other important topic of this journal is Ayushman Bharat, achieving universal healthcare coverage. We'll understand Ayushman Bharat in detail because from this section you can get an essay also. This is relevant for your essay paper, as well as this is very important for your general studies paper 2, and this can also contribute to your general studies paper 4 in the case studies. ना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस की अगर स्टेटमेंट्स को देखें या फिर उनके जो एक थीम की तरफ देखें तो हाईएस्ट पॉसिबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ जो है वो फंडामेंटल राइट है हर एक इंडिविजुअल के. दिस इज व्हाट WHO हैज टू से एंड यू कैन इवन कोट इट, राइट? So the right to health has become central identity and mandate of since the inceptions of the mankind, or even जब ये institutions बनी है तब से. To achieve the target of universal health coverage, Government of India has implemented flagship public healthcare scheme which is also known as Ayushman Bharat. ये based है recommendations on the national health policy that was formulated for the implementation in entire country. तो ये एनविसाज करती है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स को टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जहाँ पे ये मैंडेट है कि लीव नो वन बिहाइंड. ये एसडीजी के जो गोल्स हैं उसमें ये मैंडेट की गई है. नाउ अपनी अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें आयुष्मान भारत की, क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले एक कंप्रिहेंसिव नीड बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम बनाने की बात की गई है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. और बजट आउटले की अगर बात करें फॉर प्रीवियस ईयर वाज 8,000 crore rupees, right? And it aims to have a holistic address the healthcare system covering preventive, promotive, ambulatory and other level of primary, secondary and tertiary healthcare services both in rural as well as in the urban areas, right? Now to enhance the quality यहाँ पे ज़रूरी है तो हमें quality enhance करनी है, efficiency बढ़ानी है और efficacy बढ़ानी है for the healthcare deliveries, right? And it draws services from facilities like various sectors and other department of the government as well as the state government. ना कुछ ग्लोबल मेजर्स की अगर बात करें ग्लोबल लेवल पे क्या क्या चीज़ें की गई हैं टू हैव अ सस्टेनेबल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ सर्विसेज एट ग्लोबल लेवल. Alma Ata Declaration, which was started way back in 1978, that emerged as a major milestone for the public health. This is something very relevant if you're writing in mains. Make sure you incorporate this point, right? Subsequently, अगर MDG की बात करें, Millennium Development Goal या फिर Millennium Declaration की बात करें, right, they formulated 8 goals with 21 target, जहाँ पे series of health और economic indicators भी include किए गए थे. उसके बाद 2015 में MDG से अपग्रेड किया गया SDG में, and this Sustainable Development Goal has collected almost 17 goals with a total target of 168 and set 232 indicators to measure the progress of healthcare. Now the SDG goal 3, which call for addressing the healthcare directly, and SDG 2, SDG 6 and SDG 5 are some of the important which are indirectly related to the healthcare, right? So this is number 5. Now Asanta Declaration has shifted the focus to Alma Ata, that is primary healthcare services with universal health coverage in India. We have understand the universal health coverage in detail, so this would be more easy for you to understand कि किस तरह से इंडिया में गवर्नमेंट की क्या अप्रोच है with regards to the UHC, that is universal health coverage. Now UHC की अगर बात करें, यहाँ पे इस चीज़ को प्रपोज की गई थी बाय द बोर्ड कमेटी 1946, जिन्होंने हाईलाइट किया था कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स और कम्युनिटीज़ के प्रॉब्लम को, जहाँ हेल्थ सर्विसेज को इन्हांस या फिर जो इकोनॉमिकली स्ट्रेस लोग हैं उनको कैसे हमें हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है उसको लेकर. सो द कमिटी हैज़ रिकमेंडेड द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव सर्विसेज एट ऑल लेवल, राइट, जहाँ पे प्लान स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज की बात कही गई. Now, according to the World Health Organization, this in 2021, universal health coverage include full spectrum of essential quality health services, which have health promotions to prevention, treatment, rehabilitation, palliative across the lifespan. This is how the UHC concept evolved, right? Now, अगर UHC की बात करें, इसके इंडिकेटर्स हैं जिन पे कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को ट्रैक करनी होती है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक ने प्रोवाइड किया इंडिकेटर्स को टू हेल्प मेजर एज वेल एज कीप ट्रैक रिकॉर्ड ओवर द प्रोग्रेसिव टाइम. इसकी ट्रैक की जाए, असेसमेंट की जाए कि रियल टाइम स्टेटस में क्या परफॉर्मेंस है, राइट? सो एसेंशियली देयर आर 16 एसेंशियल इंडिकेटर्स विच गिव द लेवल ऑफ कवरेज फॉर द एंटायर कंट्री. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की अगर बात करें, दैट इज रिप्रोडक्टिव, मैटरनल एंड न्यू बॉर्न हेल्थ. ये एक कैटेगरीज है जिनके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को देखनी होती है, विच इंक्लूड फैमिली प्लानिंग, एटर्नल एंड डिलीवरी केयर्स, फुल चाइल्ड इम्यूनाइजेशंस एंड health seeking behavior of pneumonia or for pneumonia. Now the other indicators, infection diseases, जिसके सब indicators हैं tuberculosis treatment, HIV antiretroviral treatment,
use of insecticides, bed nest and malaria prevention, and uske baad adequate sanitation, right? If you want to learn it, you can take a screenshot of this, which would be easy for you to revise also. Now, other two important indicators include non-communicable diseases, उनके सब वेरिएंट है, preventive and treatment raised for the blood pressures, preventive and treatment to raise blood glucose, cervical cancer की screening, tobacco, non-smoking की तरफ. Now again, service capacity and excess की बात करें अगर excess की service capacity and excess, which include basic hospital access, healthcare worker density, access to essential services, and health security with compliance with the international health regulation, not only nationally, but we have to adhere to the global practices as well. Now, आयुष्मान भारत फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की अगर बात करें, इसके दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं. फर्स्ट इज द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जहाँ पे ऑलमोस्ट 1,50,000 के आसपास हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाने की बात की गई अंडर आयुष्मान भारत, विच कैन ट्रांसफॉर्म द सब सेंटर एंड द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, राइट. अब मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड कंप्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर क्लोजर टू रेसिडेंट, और जो प्रॉक्सिमिटी एरिया, जो विसिनिटी है, उसके आसपास में ही हर एक रूरल एरियाज में एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हों या सब जो प्राइमरी सेंटर्स हैं वो बनाए जाए, राइट. दिस सेंटर वुड पर्टिकुलरली एम टू प्रोवाइड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, जहाँ पे कुछ मेजर आइटम्स पे ध्यान दी जाएगी, विच इंक्लूड कम्युनिकेबल डिजीजेस, लाइक इन एडिशन टू दैट दिस विल ऑल्सो प्रोवाइड फॉर फ्री एसेंशियल ड्रग and diagnostic services, which is essentially required at this juncture, because in India we have seen जो रूरल एरियाज की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज नॉट दैट ग्रेट, तो कम से कम जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं वो उनको मिलनी चाहिए, राइट. अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की अगर बात करें, उससे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर, दिस कैन अगेन समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, अ डायरेक्ट स्टेटमेंट कैन बी आस्क्ड. तो एनुअल बेनिफिट की अगर बात करें, 5 लाख रुपीज दी जाती है, विच कैन बी यूज्ड बाय एनी फैमिली मेंबर्स. The eligible individual suffering from any medical conditions even before the enrollment of the PMJ will be eligible to get the treatment. It provides for cashless access to healthcare services beneficiary at the point of services. It covered up to 3-day pre-hospitalization and 15 days post-hospitalization expenses जो diagnostic और medicine में incur होती है. Benefits of the scheme are portable across the countries, और public health और reimbursed जो healthcare services हैं is par with the private hospital as well. Now, yoga for good health, again something very important. Yoga is something not which is practiced in India, which is actually has origin from India, but it is now a global practice, right? So recognizing globally that yoga, United Nations ने 11 December 2014 को एक resolutions पास की थी 69/131, जहाँ प्रोक्लेम किया गया June 21 को as a International Yoga Day. International Yoga Day is aimed to create awareness worldwide, where many benefit is being provided for practicing yoga. और जो थीम थी इस बार की योगा इंटरनेशनल योगा डे की वाज योगा फॉर वेलनेस, राइट. अगेन थीम इज समथिंग इंपॉर्टेंट, दे कैन आस्क यू इन एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल. अब बैकग्राउंड की अगर बात करें, द प्रैक्टिस ऑफ योगा इज बिलीव टू हैव स्टार्टेड विद ड्रॉन फ्रॉम द सिविलाइजेशन. इंडिया में पतंजलि जो एक इंडिविजुअल थे, उन्होंने स्टार्ट की 2000 ईयर अगो ये पहले स्टार्ट हुई है. इसकी जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो योगा सूत्रा में सारे ये मेंशंस हैं. तो पतंजलि डिफाइन योगा एज द सेशंस ऑफ मूवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस. क्या क्या बेनिफिट्स हैं योगा के? बेसिकली इट्स गिव यू अ रिलैक्सेशन. आई थिंक दीज आर सम ऑफ द बेसिक पॉइंट व्हिच एवरीवन मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, बट देन ऑल्सो विल डिस्कस दिस. स्टडी कंडक्टेड की गई थी एम्स में, जहाँ ये बताया गया है इट डज नॉट ओनली रिड्यूस माइग्रेन बट इट ऑल्सो हेल्प टू लोअर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनी डिजीजेस, राइट. योगा कॉन्ट्रीब्यूट टू द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी. जो पेप्टिक अल्सर जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी योगा के थ्रू ट्रीट की जाती है. परफॉर्मिंग आसन कैन इंप्रूव द ब्लड सर्कुलेशंस डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में, और इवन इट कैन इंक्रीज द रिकवरी ऑफ एन इंडिविजुअल. रेगुलर योगा प्रैक्टिस करने से जो एज प्रिवेंट होती है, जो कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो प्रिवेंट होती है. इवन इट कैन किल 41 मिलियन पीपल बेसिकली विच ग्लोबली एवरी ईयर हैज अ प्रॉब्लम ऑफ प्री मैच्योर एजिंग, डिलेइंग एंड डाइंग, राइट. सो योगा हैज म्यूचुअल, इसके बेनिफिट्स की अगर बात करें, एक बहुत ही कंप्रीहेंसिव प्रैक्टिस है जो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में की जा रही है. नाउ इनिशिएटिव ऑफ आयुष्मान मिनिस्ट्री की अगर बात करें, जो आयुष मिनिस्ट्री है वो किस तरह से इस पे काम कर रही है. इट हैज लॉन्च Namaste Yoga app. You can also download this app, an informative app that will give you a lot more information, right? Now the app is informative platform है that is looking for yoga centers, even and trainers. और ऐप ये प्रोवाइड करती है जो योगा सेंटर्स हैं उनके ट्रेनर्स को किस तरह से ट्रेन किया जाए. कुछ एक ऐसे योगा और आसन्स होते हैं दैट हैज़ टू बी टॉट अपॉन. उसमें स्मॉल वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहाँ से आप उसको सीख सकते हैं. सर्टिफाइड ट्रेनर्स का रजिस्टर देमसेल्फ फॉर द बिजनेस एड्रेसेस ऑन ऐप बाय द जियो टैग टू द लोकेशंस.
Now, this enable people to find yoga center and in the neighborhood as well, right? गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने, जो दिल्ली एनजीटी की गवर्नमेंट है, उन्होंने भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव स्टार्ट किए जहाँ पे आपके घर पे जा करके लोग योगा सिखाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट है जो इस तरह की कोशिश कर रही है ताकि योगा को यूनिवर्सल किया जा सके इंडिया में। Last September, the Union Minister of Ayush has launched Yoga Break app, a mobile app to enable professional for de-stress at workplace also, right? तो जो कॉर्पोरेट ऑफिसर्स हैं वहाँ पे वर्क प्लेस में भी कैसे एक डी स्ट्रेस मोमेंट क्रिएट किया जा सके, उसके लिए योगा ब्रेक की एक मोबाइल ऐप बनाई गई। नाउ ई हेल्थ सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस, राइट? So e-health can be described as a delivery of healthcare services जहाँ पे electronic informations communications technology के थ्रू यूज की जाती है, और e-health services are provided in a setting where healthcare provider and patients are not directly in contact but interactions होती हैं through mediations और electronic means। यहाँ पे e-संजीवनी के एक एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, which is something very important। टेलीमेडिसिन की कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। Now it consists of electronic health data जहाँ पे M-Health है मोबाइल ऐप, it refers to the practice of medicine as well as welfare using the smart devices. Now telemedicine, as I've told you, यहाँ पे telemedicine का मतलब है एक remote delivery healthcare services प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पे medical examinations consultation होंगी using a telecommunication service, चाहे वो आपके मोबाइल फ़ोन पे हो, लैंडलाइन पे हो या किसी और मीडियम से। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स EHR कहते हैं जिसको, एक सिस्टमाइज कलेक्शंस ऑफ पेशेंट हिस्ट्री है, स्टोर की जाती है इलेक्ट्रॉनिक और इसको एक्सेस की जा सकती है मल्टीपल फॉर्मेट्स में। वेरिएबल सेंसर्स की बात करें, इट रेफर टू द मॉनिटर विच हेल्प ट्रैकिंग इंडिविजुअल बॉडी लाइक हार्ट रेट, स्लीप, ऑक्सीजन क्वालिटी, कितनी ब्लड में ऑक्सीजन हैं, ऑक्सीजन लेवल्स किस तरह के हैं, वो सारी चीज़ें इसमें चेक होती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया है कि कुछ 3 ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो ई हेल्थ में एसेंशियली होनी चाहिए। फर्स्ट इज डिलीवरी ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन ऑन रिकॉर्ड बोथ professionally as well as consumer level पे, using power for the information technology like e-commerce platform to improve public health infrastructure, and the last but not the least, that is the use of e-commerce and business practices in healthcare management system. But this is how the WHO has evolved with the key area and focus with the e-health in the entire world. नाउ एडवांटेजेस की अगर बात करें, एफिशिएंसी डेफिनेटली प्रमोट होती है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हेल्थ केयर में, दैट इनेबल्स द प्रोफेशंस टू रिड्यूस द इनएफिशिएंसी, टाइम सेविंग भी है एंड इवन एक्यूरेटली डायग्नोस्टिक होती है किसी भी डिजीज को लेकर, राइट? रिड्यूशन इन कॉस्ट, रिडक्शंस इन कॉस्ट में मोर एफिशिएंट ट्रीटमेंट है जहाँ पे पोटेंशियल वे से जो डुप्लीकेट असेसमेंट है उसको भी इंप्रूव किया जा सकता है बिटवीन द हेल्थ केयर एंड इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिपोर्ट्स। एम्पावरमेंट होती है लोगों को ई हेल्थ सर्विसेज में, ये देखा गया दैट कंज्यूमर एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर फील मोर एम्पावरमेंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबल नॉलेज, मेडिकल डेटाज हैं, हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं, वो ओवर इंटरनेट है, तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट भी फील होती है। एजुकेशन मिलती है लोगों को फॉर बेनिफिशियल ऑफ एजुकेटिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मेडिकल एडवांसमेंट, एंड दिस सर्विसेज ऑल्सो बेनिफिट कंज्यूमर टू एजुकेट देमसेल्फ इन अ पर्सनलाइज्ड preventive healthcare, right? So this is something education is promoting, and even it can be a preventive medicine that can be, something that can be promoted to a larger extent. Faster decision making है with advancement of the decision making software, ये increase कर दी है automations को, जहाँ पर decision making with regards to medical situation has become more faster and much efficient. Now, major trends की अगर बात करें हेल्थ केयर में, बिग डेटा है, बिग डेटा is expected to be a game changer in the space by providing lower level of mediations error. Virtual reality VR भी काम कर रही है, which is already stated as a mark of digital health, जहाँ पे ये आपकी जो कुछ important problems हैं डेली लाइफ की, एंजाइटी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, इवन स्ट्रोक among the problem, which virtual reality can play a very significant role in complicated surgeries as well, right? So state of art technology, modern technology has been incorporated in our healthcare services as of now. वेरिएबल्स मैंने आपको बताया, स्मार्ट वॉच जो है आपके शुगर मॉनिटर करेंगे, आपके जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, ऑक्सीजन कितनी अपने वॉच की, कितनी कैलोरी आपने बर्न की है, ये सारी आपको वहाँ डिटेल मिल जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज अ पावर हैव टू इंटेलिजेंस इन एरिया सच ऑफ प्रिसिजन मेडिसिन टैगिंग, ड्रग्स एंड जेनोमिक्स। उसके अलावा ब्लॉकचेन है, दिस इज द एडवांस लेवल जब टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है टू डिप्लॉय एंड क्रिएट अ डिजिटल वर्जन ऑफ मेडिकल चार्ट्स। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर इवॉल्विंग। Now, measures by the government in health services, अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं रिगार्डिंग द हेल्थ केयर इन व्यू टू एम्पावर सिटीजन थ्रू डिसेमिनेशन ऑफ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, राइट? कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स की अगर बात करें, नेशनल ई हेल्थ अथॉरिटी बनाई गई है 2015 में, विच वुड सर्व एज अ प्रमोशनल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्थ सेक्टर। Now again, this National E-Health Authority
is aim and goal to ensure development and promotions of e-health ecosystem in our country, जहाँ पे enable की जाएगी organization management, provision of effective people-centric health, and efficient, cost-effective, and transparent manner. So this is how the government important measures in terms of healthcare services is being provided and implemented. Now, Hospital Information System (HIS) है जो again implement की जा रही है computerized centralizations or capturing of the patient data. And HIS, that is Hospitalization Information System, is efficient and lead to better delivery and service to the patients, right? So in this in a comprehensive manner, you can understand how things are working. Technology upgradation, state of art technology, everything is aided and aiding our overall healthcare system in our country, right? Now, to facilitate greater adoption of telemedicine, government has undertaken implementations of National Telemedicine Network, जिसको NTNB कहा जाता है. ये telemedicine services को upgrade करेंगे in the existing healthcare facilities, and this service aims to overcome existing challenges जहाँ पे specialities की बहुत ज़्यादा problem है, inaccessibility of doctors हैं. ये सारी चीज़ें information technology और आज के up to date technology, state of art technology से replace की जा सकती है. Now, the government has also started e-संजीवनी portals, डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन की एक पोर्टल स्टार्ट की गई है जो कि आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर ही इंक्लूडेड है, राइट? So this was all about the compilation for the Kurukshetra. We have a lot more other initiatives for you. But before I start, we have a prelims test series that you can register yourself. The 60 high quality test along with the 12-month subscription of the IAS GAZETTE magazine. For more details, you can refer to the description section down below. And you can find other details and you can purchase this course as well. We have a lot more other initiatives for you like daily news and editorial analysis. IAS GAZETTE की मैगजीन है मंथली जो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे आईएस ज्ञान के वेबसाइट से. FCA है, PIB है, MPR है, जस्ट ऑफ योजना एंड कुरुक्षेत्र, माइंड मैप, डेली ब्लॉग्स और डेली स्टैटिक क्विज है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वेबसाइट्स पे. So all this initiative will definitely help you to sail through the journey of civil services. Do check it out. And if you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.